Namaste, my dear students. Today we are going to start with a new poem, The Lake Isle of Innisfree. It is written by the poet William Butler Yeats. So, dear children, this is a very interesting poem because we all can very easily relate to it. हम इस poem से बहुत अच्छे से connect कर सकते हैं. You know why? Because in this poem, the poet, poet अपने thoughts express कर रहा है and he is in a situation where he is feeling very stressed out. He is feeling some kind of anxiety and depression. Okay? So basically the poet is walking on the streets of London. Okay? And he is thinking that what is going on in my life? क्या चल रहा है मेरी लाइफ में? ये लंदन में इतना सारा शोर, इतनी so much noise and so much pollution, all the city life problems which are faced by people. Why am I here? And he is desperately missing his childhood place. उसने बचपन में जो अपना वक्त गुजारा था लेक आइल में, इनिसफ्री में, वो उसे बहुत याद कर रहा है. क्यों? Because now I will tell you the secret. Lake Isle of Innisfree. So first of all, Innisfree is a place in Europe. Okay, in European continent. And Lake Isle. Lake, the meaning of lake is a very small water body. Okay, एक छोटी सी water body. And isle, the meaning of the word isle is island. Okay, so Lake Isle of Innisfree. तो पोएट का बचपन एक ऐसी जगह पे गुजरा था जो एक कंट्री साइड हो, दैट इज इट इज क्वाइट अ रूरल साइड एरिया. ओके, वहाँ एक प्यारा सा लेक था. जब वो छोटा था तो वो उस जगह रहता था. एंड वहाँ जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ साइलेंस देयर ही मस्ट हैड इन हिज लाइफ. ओके, सो इस सिटी लाइफ में पोएट बहुत मिस कर रहा है उस लेक साइड आइलैंड को. An island is a piece of land, okay, which is covered by water from all around. So let's see what are the thoughts of poet while he is walking on the streets. वो कितना मिस करते हैं उस आइलैंड को, उस लेक आइल को एंड इनिसफ्री को अपनी लाइफ में, एंड what he is planning to do next. Let's begin. The Lake Isle of Innisfree, written by the poet William Butler Yeats. So dear students, I hope you can see in this picture that piece of land which has a green color, how it is surrounded by water all around. Okay, so this is called a small island, a piece of water body, okay, which surrounds a small piece of land. A small piece of land के चारों तरफ से छोटे से लैंड के आसपास पानी होता है हर कहीं, उसे आइलैंड कहते हैं. I will arise and go now and go to Innisfree. So the poet is trying to think in his mind, and the first line in his mind is that मैं अब definitely खड़ा हो जाऊँगा. I will stand, I will arise. Okay, the meaning of arising means that he will stand up and he will definitely go to his island, his favorite island, full of silence and peace, to Innisfree. And a small cabin built there of clay and wattles made. Okay, so first thing उन्हें Innisfree जाके करना है कि he wants to build a small cabin. A cabin is a small room or a small hut. Okay, उन्हें एक छोटा सा रूम बनाना है and वो रूम उन्हें clay and wattles का बनाना है. Okay, so clay means मिट्टी and wattles means they are interconnected twigs for fences. So can you see in this picture, the house is surrounded by a interconnected means twisted, एक दूसरे के ऊपर लगी हुई जो ये डंडियाँ आप देख सकते हैं, इसे फेंस कहते हैं एंड ये प्रोटेक्शन के लिए होता है. ओके, सो wattles is that material जिससे वो it is a bamboo kind of material, a wooden material जिससे जो फेंस बनता है या घर के वॉल्स बनते हैं, इट इज़ नोन एज वॉटल्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो पोएट को करना है इनिसफ्री जाके वो है कि ही वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज ओन केबिन. उन्हें अपना रूम बनाना है क्ले का, मिट्टी का एंड वॉटल्स का. उसका जो फेंस है अपने घर का वो वॉटल्स से बनाना है. 9 bean rows will I have there. ओके,
अब वहाँ जाके पोएट को सारी चीज़ें कस्टमाइज चाहिए हैं. ओके, सो कस्टमाइज मीन्स ही वांट्स दैट वो जो खाना चाहते हैं वो उसी की प्लांटिंग एंड उसी का फार्मिंग करना चाहते हैं. सो पोएट ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी कि वहाँ जाके उन्हें बीन्स की प्लांटिंग करनी है. बीन मीन्स फली. ओके, एंड उन्हें कितने रोज़ बनाने हैं? ओके, उन्हें अपनी फील्ड में 9 रोज़ चाहिए. मीन्स 9 लाइन्स ऑफ बीन. 9 जो फलियाँ हैं वो उसकी 9 लाइन्स उनको सो करनी है एंड उसी चीज़ की प्लांटिंग करनी है एंड उन्हें वो बीन्स ही खाना है एज हिज फूड वंस ही रीचेस इनिस्फ्री. अ हाइव फॉर द हनी बी. ओके, हाइव फॉर द हनी बी मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ता होता है. ओके, इन हिंदी वी कॉल इट मधुमक्खी का छत्ता. सो अ हाइव ऑफ हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. सो बी लाउड ग्लेड मीन्स वो अपने आइलैंड में किसी भी तरह का नॉइज़ नहीं चाहते हैं. ओके, वो चाहते हैं कंप्लीट साइलेंस. ये जो रोड्स पे जो व्हीकल्स की नॉइज़ होती है या पीपल टॉकिंग टू ईच अदर, एनी काइंड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ही डजेंट वांट ऑन हिज आइलैंड इन इनिस्फ्री. वो बस एक ही साउंड चाहते हैं एंड वो होता है बजिंग ऑफ हनी बी. सो पोएट इज़ थिंकिंग कि मुझे इनिस्फ्री जाके सिर्फ एक साउंड चाहिए, सिर्फ एक ही नॉइज़ चाहिए. उनका फेवरेट नॉइज़ वो है हनी बी का नॉइज़. हाउ डज अ हनी बी मेक्स नॉइज़? ओके, दैट नॉइज़, दैट साउंड इज़ कॉल्ड बजिंग. ओके, सो ही वॉन्ट्स टू सी कि हनी बी अपना वो मधुमक्खी का वो जो हाइव है, वो जो छत्ता है, वो बना रही हैं एंड दे आर buzzing all around in the island. So my dear students, this is an example of a small cabin which the poet is wishing to build for himself. As you can see these fences, okay, these are made of wattles. Wattle is an interconnected twigs for fences. Okay, so these are वो एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई हैं ये जो twigs हैं, and this is wattles and the cabin, that small room, it is made up of clay. So this is the first thing the poet wants to do once he starts living in Innisfree. Second thing the poet wishes to do is to grow only the crops which he wants to eat. Okay, and poet अपने लिए कौन सा crop grow करना चाहते हैं? It is a crop of bean. Okay, he is thinking that he wants to grow 9 bean rows. Okay, इस तरह की 9 lines और 9 rows of beans, that means जो फली होती है, he wants to grow that and eat only that. So this shows the poet is wishing for a very simple life. Okay, William Butler Yeats सिर्फ एक बहुत ही simple, peaceful, noiseless life की wish कर रहे हैं in his life. The third and the final thing in the first paragraph or this first stanza the poet wants is that he wants a beehive on his island. वो चाहते हैं कि जहाँ वो रहेंगे उनका केबिन होगा, उनके बीन्स ग्रो हो रहे होंगे एंड उसी सेम प्लेस पे, उस आइलैंड पे वो चाहते हैं कि देयर शुड बी अ बी हाइव. दैट मीन्स मधुमक्खी का एक छत्ता होना चाहिए एंड ही wants that all the honey bees must be buzzing all around. ओके, हनी बी जो नॉइज़ जो साउंड होता है उनका बजिंग का, ही वॉन्ट्स टू लिसन ओनली टू दैट साउंड एंड वो सिटी लाइफ का एक भी साउंड नहीं सुनना चाहते हैं. देयर शुड बी नो पर्सन, नो अदर थिंग अराउंड हिम. ओके, सो ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. So the meaning of the word glade means an open space. Okay, and open and smooth space, एक खुली जगह जहाँ पे सिर्फ be loud, that means only bee, honey bee की आवाज़ होनी चाहिए. So my dear students, this was the explanation of the first paragraph and इससे हमें ये समझ आता है, we understood that the poet wants only peace in his life, peace and tranquility, that's it. So for this video I will stop over here and in the next video we will cover up our paragraph number 2 and 3 and we will see what else does Mr. William Butler Yeats wants to have in life, what are other things on his bucket list. Okay, so goodbye for now and take care.